every Sunday at 9 p.m. We come up with static GK and current affairs, and this is the 17th part, and we are here with you. So if I'm audible, just write in the comments, yes sir, you're audible. अगर मेरी आवाज आ रही है आप एक बार लिख दो, yes sir, you're audible. Some people were asking, sir, where do I find the previous videos and all previous parts? So just go to the YouTube channel BYJU'S CAT, जिस पे आप देख रहे हो अभी, subscribe to it, and आप इसमें playlist में search करना ये वाला playlist. देखो, जनरल नॉलेज फॉर XAT, IIFT, टेस्टनेट, CMAT. When you search it, यहाँ पे देखो नीचे लिखा व्यू फुल प्लेलिस्ट. So click on that and you will get the entire playlist. Okay, and from there you can watch those videos. Okay, so let's start with the first question. On which date demonetization of 500 and 1000 rupee note happened? And these are the dates. Now, why I am giving this date? Because recently rupees 2000 rupee note also got a sort of demonetization also happened of 2000 rupee note. Okay, I hope you are aware of that. So that is why now it becomes important that they can ask about 500 and 1000 rupee note demonetization. So on which date it happened? कोई बता सकता है? Because I think you should be knowing it. It was actually 8th November 2016. So C is the right answer to this question. And why I'm asking this question? Because 2000 rupee note actually. So it was the last date was 30th September, and later on it was extended till 7th October, right? I hope you are aware, last date to deposit rupees 2000 notes. What next if 7th October deadline is missed? So this was in the news, and that is why I've asked a question regarding the previous demonetization. Okay, now let's move on to the next one. This city was in the news. Bakhmut is a city which was in the news a few months back. It is, you will find it where? Russia, Japan, Australia, Ukraine. Where do we find Bakhmut? So the right answer to this question actually is D is the right answer. Actually, Russia-Ukraine war is happening. I hope you are aware for the past 1.5 years. So here is Russia, here is Ukraine, and here near the border, this is Russia-Ukraine border, and here you will find Bakhmut. Okay, so it was in the news. That is why I've discussed it. Okay. Now, the next one is, who is the Prime Minister of Australia? Actually, he came to India in the month of, I think, May, and recently also in September when actually G20 summit was happening. Okay, and we have last year with Australia done a deal called as ECTA, ECTA agreement. Okay, or sometimes called as Indus ECTA also, with India, Australia. So Indus ECTA also it is called. So please go and find out what is the full form of ECTA. That is, we have done it with Australia. So the right answer is Anthony Albanese. C is the right answer to this question. So he was in the news in the May also. He came to India and traveled by train, bus. Australian PM Anthony Albanese tip to understand India. Okay. Yes. Aryan was, yes, C is the right answer to this question. Okay. The next one is, which of the following article is violated when a law is made arbitrarily? So this is a question from Constitution, Article 14, 19, 29, 44. So when a law is made arbitrarily, which article is violated? So when you are making something arbitrary, you are violating the idea of equality before law. This is actually mentioned in which article of the Constitution? So if you have read it, Article 14 talks about equality before law, यानी कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं, right? So that is what you should be knowing it. So when a law is made arbitrarily, it is actually violating Article 14. So A is the right answer. ये कई बार news में रहता है, equality before law and all. So you should be knowing it. Okay, yes, A is the right answer. The next is ये कई बार news में रहता है BRICS. ये सबसे सवाल आता है. A lot of times we have seen questions from BRICS, फिर SARC, फिर BIMSTEC, ये सबसे क्वेश्चन आता है. लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. ठीक है, सो बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. इट्स अ ग्रुपिंग. आई होप यू आर अवेयर. सो यू आर सपोज टू टेल मी. योर ऑप्शंस आर बीजिंग, शंघाई, मॉस्को, न्यू दिल्ली. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? एनीवन? So it's actually headquartered in a city of China called as Shanghai. So B is the right answer to this question. Let me show you where exactly it is. Yes, Aryan was very good. Shanghai is the right answer. Here is India. This is China. ये China की capital है Beijing, and this is Shanghai. Shanghai is a very famous port city of China. ठीक है. So B is the right answer to this question. Here it is actually BRICS.
which stands for, B से stands for Brazil, R is for Russia, I is for India, C is for China, and S is for South Africa. Okay, now I hope you are aware recently some new countries have been added. So this year 6 new countries have been added in BRICS. Okay, so BRICS, BRICS, plus 6 new countries are now there. So earlier there were 5 nations, now 6 have been added, and these 6 nations are, you should be knowing it, Argentina, Egypt, Iran, Ethiopia, Saudi Arab, and UAE. Now this becomes very, very important. So please star mark it. There is a probability that they can ask questions from here: Argentina, Egypt, Iran, Ethiopia, Saudi Arab, and United Arab Emirates. Okay, yaad rahega. Now the next question is, what is the name of BRICS bank? So BRICS, the grouping of BRICS has formed a bank also, and these are the 4 options. The first one is AIIB, which stands for Asian Infrastructure Investment Bank. The second is NDB, New Development Bank. The third is Asian Development Bank, and the fourth is World Bank. तो जो ब्रिक्स की ग्रुपिंग है, उन्होंने जो बैंक बनाया है, उस बैंक का नाम क्या है बताइए? आई एम वेटिंग फॉर इट. एनीवन? So actually the right answer is NDB, New Development Bank is the right answer to this question. Again headquartered in Shanghai. ठीक है? So B is the right answer. ठीक है? The next one is नहीं, NDB है, ठीक है? AIIB जो है different bank है. Okay? So the right answer here is B. Who gave the idea of BRIC which later became BRICS? Originally BRICS का idea जो है किसी एक बहुत famous economist ने दिया था. So he actually gave the idea of BRIC: Brazil, Russia, India, China. However, later on South Africa also got added, so it became BRICS से BRICS हो गया. And now in fact 6 more nations have been added this year in 2023. So the original idea of BRIC was given by whom out of these 4 people? किसी को पता है इसका आंसर? द राइट आंसर इज जिम ओनील, गोल्डमैन सैक्स के बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है. सो बी इज द राइट आंसर. आप देखो, है ना? सो इट वाज कॉइन्ड बाय गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट जिम ओनील. सो बी इज द राइट आंसर. यस, अनिरुद्ध इज राइट. साई बनोत, यस, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. Now since we are talking about BRICS, please tell me 2023 BRICS summit happen in which country? और अगर आप सिटी बता दो तो और अच्छा है. So these are your options: China, South Africa, Brazil, India. So in which place this year the BRICS summit happened? Okay, so the right answer to this question is South Africa. B is the right answer. Johannesburg. अभी मैंने ये दिखाया था, ये आर्टिकल. BRICS invites 6 countries including Saudi Arabia, Iran to be new members. तो यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है ना, 15 BRICS Summit, Johannesburg, South Africa. Yes, it is written there clearly that this year the BRICS Summit happened in South Africa. Okay, yes, yes, very good. Sai Banod, Alauddin, Haf, Sariga, Aryan Vas, you are right. B is the right answer. The next one is Supreme Court has set up a committee under a retired judge to probe Adani Hindenburg issue. What is the name of the judge? So I hope you are aware, this was in the news, especially in the month of January, February and all. So the Supreme Court actually set up a committee which is headed by a former judge of Supreme Court. So what is the name of the judge who is heading that committee? उनका नाम आपको बताना है. बताइए. So the right answer is Justice A.M. Sapre. So B is the right answer to this question. Adani Hindenburg Rao, Supreme Court confirms receipt of Justice Sapre panel report and all. तो अभी recently report वगैरह भी आ गई थी. ठीक है. So B is the right answer to this question. Okay, just have an idea because they can ask questions from here also. The next is, what is the name of the first Arab woman who has gone to space? Your options are Rayana Barnawi, Amina J. Muhammad, Sheikh Hasina Wajid, Samia Suluhu Hassan. नहीं, इससे पहले का आंसर बी था, जस्टिस एम सापरे. सो बी इज द राइट आंसर. ठीक है. फर्स्ट अरब वुमन हु हैज गॉन इनटू स्पेस. दिस वाज आल्सो इन द न्यूज़ इन द मंथ ऑफ May, June and all. So we are covering it from there till the November we'll cover it. So please watch each and every session because if you watch all the sessions, then entire current affairs will be covered, है ना? तो ये है कि आपको सारा, मैंने आपको playlist भी दिखा दिया in the initial portion of the class. In the beginning of the class, I have told you how to watch, go through the playlist of all the previous parts, है ना? So this is the 17th part, but we have already done the 16th part in the. So here the right answer is Rayana Barnawi. So A is the right answer to this question.
फर्स्ट सऊदी वुमन टू वोयेज इन स्पेस? किसी ने ऑप्शन सी बताया? देखो, शी इज एक्चुअली द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर. So yeah, the right answer is A, Rayana Barnabi. Okay. The next is question number 11. Which of the following article of the Constitution says that president is a part of parliament? Article 81, Article 79, Article 83, Article 89. Now, why I'm asking this question? Because we have seen a new parliament building, which was actually inaugurated on 28th May. Okay. So that is why it becomes important that we should be knowing something about parliament and all. So which article says that president is also a part of parliament? कोई बता सकता है? So actually it is Article 79. So B is the right answer to this question. So PM Modi inaugurates new parliament building, है ना? So on 28th May and all. So देखो, this is the new parliament building. I hope you are aware of that. So when you read it, it says the parliament of the union shall consist of president of India and two houses, known as Council of State and House of People. लिखा है कि नहीं? So Council of State is nothing but we call by name Rajya Sabha, and another one is called as House of People. We know by the name of Lok Sabha. Okay. So and तो इसका मतलब क्या है कि Parliament comprises of President plus Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है. So President is also a part of Parliament. You should be knowing it. ठीक है. So B is the right answer. Yes. Aryan was Sai Banot. Yes, B is the right answer. The next is when the parliament was inaugurated, this was very much in the news. The Sengol, which was installed in the new parliament building, ये है Sengol, ठीक है, was earlier kept in New Delhi Museum, Kolkata Museum, Prayagraj Museum, Chennai Museum. What is the right answer to this question? और इसके जो टॉप पर है, you will find a bull there, है ना? और ये this actually became very famous in the month of May, June and all. It was coming in the news. So Sengol, which was installed in the new parliament building, was earlier kept in where? बताइए. So earlier it was kept in Prayagraj Museum, earlier called as Allahabad, है ना? So I hope you are aware. So C is the right answer to this question. Now the Sengol, which was originally used to mark the handing over of power from, actually यहाँ से यहाँ चला गया, passage change हो गया गलती से. So Sengol actually used to represent power transfer from one king to another king. So it was actually from which dynasty? Chera dynasty, Chora dynasty, Pallav dynasty, Vijayanagar empire. ठीक है. इससे पहले कौन सा था? वो प्रयागराज म्यूजियम है, नॉट चेन्नई म्यूजियम. ठीक है. सो सी इज द राइट आंसर. यस, आत्माकुरी निखिलेश वाज राइट. आत्माकुरी निखिलेश वाज राइट. सी वाज द राइट आंसर. इसका आंसर बताइए कि सेंगोल जो है, ये सेंगोल है ना, आपको ये बताना है कि कौन से डायनेस्टी में पावर ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता था. सो द राइट आंसर इज चोला डायनेस्टी. बी इज द राइट आंसर. यस. सो चोला डायनेस्टी वाज एक्चुअली, यू कैन फाइंड इट इन मॉडर्न डे तमिलनाडु रीजन, दिस रीजन में. ठीक है. ओके. यस, सरिगा अलाउद्दीन हक, आत्माकुरी, साइबनोथ, यू आर राइट. बी इज द राइट आंसर. ठीक है. Sengol to be installed in the new parliament, significance of the scepter first given to Nehru and all. ठीक है. So these are the things where it was coming and the news, just have an idea. अच्छा, एक सवाल है. This is slightly a unique type question. World's largest mangrove forest is located where? Sundarban mangrove, Pichavaram mangrove, Florida mangrove, Godavari Krishna mangrove. Mangrove forest समझते हो? You will find it mostly in the near coastal region and all. And hint is, this is the same place where you will find world's largest delta. So where do you find the world's largest delta? ये स्कूल डेज में वगैरह ज्योग्राफी में पढ़ाया भी जाता है. World's largest delta or world's largest mangrove forest, both are at the same place. Yes. Sundarban mangrove या Sundarban delta आपने नाम सुना होगा. It's very famous. A is the right answer to this question. जैसे यहाँ से गंगा रिवर आती है ऐसे, है ना, इट गोज टू बांग्लादेश, यहाँ से फिर ब्रह्मपुत्र आती है एंड दे फॉर्म एक्चुअली डेल्टा. इस रीजन में को एक्चुअली इट्स अ सुंदरबन डेल्टा इज देयर व्हिच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा. हाँ, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है. गुड, वेरी गुड. हाँ, यस, आत्माकुरी, अलाउद्दीन हक, यू ऑल राइट. ए इज द राइट आंसर. एंड आर्यन वाज, साई बनोत. यस, ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. सब बेसिक चीज है ज्योग्राफी की, आपको पता होना चाहिए. Okay, before moving on, guys, these are our CAT 2022 toppers. So if they can do it, you can also. And this is our CAT 2023 program: 300 plus engaging videos, 135 plus live sessions, 75 plus mock test. And this is all India open mock from 29th September to 8th October. यानी आज आखिरी दिन है. So 12 बजे रात तक आप you can try. ठीक है.
So this will be very very beneficial for you. This will help you have an actual exam experience. Plus it will help you compare yourself with other peers, है ना, कि बाकी लोग कैसा perform कर रहे हैं और, है ना. And this is NMAT 2023 crash course shortcut to 250 marks from 26 September onwards at 7 p.m. You can watch it on our YouTube channel. So just subscribe to our channel. ठीक है? Okay. The next one is where is the headquarter of OPEC? ये कई बार न्यूज में रहता है. Organization of Petroleum Exporting Countries. Okay, so these nations actually decide the production of oil in international market, and that is why their decision is quite instrumental in deciding oil prices at the world level. So your options are Riyadh, Vienna, Sydney, Caracas. Where is the headquarter of OPEC? What is the right answer to this question? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, है ना, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. So headquarter of OPEC, you will find it in B. Option B, Vienna is the right answer to this question. है ना? Okay, so these are OPEC nations. जैसे जो डार्क ब्लू है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेनेजुला हो गया, दिस इज सऊदी अरब, ईरान, इराक, ठीक है. सो दीज आर अफ्रीकन कंट्रीज, लीबिया, अल्जेरिया एंड ऑल. सो दीज आर, ठीक है. फिर लाइट ब्लू जो है उसमें ओपेक प्लस भी, जैसे रशिया, कजाकिस्तान, ये सब भी, मैक्सिको अगर ऐड कर दिया तो उसको ओपेक प्लस कहते हैं, ठीक है. सो यार द राइट आंसर इज बी. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये कई बार न्यूज में रहता है ओपेक, ठीक है, आपको पता होना चाहिए. द नेक्स्ट इज बल्गारियन राइटर जॉर्जियो गोस्पोदिनोव won international Booker Prize on Tuesday for X, a darkly comic novel about the dangerous appeal of nostalgia. देखो, एक बुकर प्राइज होता है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, दो अलग अलग आता है, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमबीए के एग्जाम में, ये खूब पूछते हैं इन लोग, ठीक है. बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, these things, these are their favorite. So this person has won, a Bulgarian writer, he has won international Booker Prize for which book? किताब का नाम बताना है. कोई बच्चा पूछा सर वियना कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में एक जगह है, देखो दिखाता हूँ मैं, देखिए जस्ट वेट. ये इंडिया है, ये यूरोप है, यहाँ पे एक छोटी सी जगह है ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल है वियना, ठीक है. ओके, यस, प्लीज आंसर इट. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, टाइम शेल्टर, ठीक है. ये किताब है, बल्गारियन राइटर विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर डार्कली कॉमिक मेमोरी नॉवेल. देखो ये मई की न्यूज है ना. ये है टाइम शेल्टर इज इस बुक, है ना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज. सो दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको स्टार मार्क लगा लेना, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई that they can ask questions. The next is the old, since we are talking about the coming up of new parliament, the old parliament also becomes important, है ना. So the old parliament building got opened in the year 1928, 1927, 1932, 1917. और old parliament building का एक नाम दिया गया है. Now it will be named as a particular, with a particular name. What is that name? उसका नाम क्या दिया गया, कोई बता सकता है? ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग गॉट ओपन इन द ईयर 1927, ठीक है. और जब ओल्ड नाउ वी हैव मूव्ड टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन 2023. सो द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग विल नाउ बी कॉल्ड एज संविधान सदन, है ना. सो ये पूछ सकते हैं, ठीक है. सो जस्ट हैव एन आइडिया, बी इज द राइट आंसर. संविधान सदन करके कुछ नाम है, संविधान सदन, ठीक है. ओके, सो हियर बी इज द राइट आंसर, ठीक है. ना ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज डिजाइन्ड बाय हुम, ये भी पूछ सकते हैं कि किसने डिजाइन किया था. संविधान सदन, वेरी गुड, अलाउद्दीन हैज आंसर्ड इट. ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग दैट वाज मेड इन 1927 वाज डिजाइन्ड बाय व्हिच टू पीपल? बहुत फेमस लोग हैं ये दोनों. एनीवन? द राइट आंसर इज एक्चुअली एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर. आपने सुना होगा जो दिल्ली में वीआईपी एरिया, उसको हम लोग कहते हैं लुटियंस दिल्ली. हैव यू हर्ड दिस टर्म? सो यहीं से आया, बिकॉज दोज रीजन्स वेयर एक्चुअली डेवलप्ड बाय एडवर्ड ल्यूटियंस, ठीक है. तो जो वीआईपी एरिया है ना, जो इंडिया गेट एंड दोज रीजन्स, सो उसको जनरली लोग ल्यूटियंस दिल्ली नाम से ही पुकारते हैं. सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस. सो ए इज द राइट आंसर. यस, सरिगा आत्माकोरी, यू आर द राइट, ए इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ टर्की? So in May, June, there was an election in Turkey. So who won it? Please tell me. ये आसान है. Hopefully you can answer it. The right answer is B. Recep Tayyip Erdogan is the right answer to this question. Yes, है ना. So B is the right answer. Just have an idea. Okay. The next is where do you find 9 dash lines? ये भी कई बार न्यूज में रहता है. East China Sea, South China Sea, Pacific Ocean, Indian Ocean. Where do you find this? 9 dash lines.
हाँ, इससे पहले क्या दुकान था, बी इज द राइट आंसर। यस, अलाउद्दीन आत्मकोरी, यू ऑल वे राइट। इसका आंसर बताइए। 9 डैश लाइन्स, ये कई बार न्यूज में रहता है, इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट्स एंड ऑल। सो द राइट, यस आत्मकोरी, वेरी गुड। हाँ, सो साउथ चाइना सी में देखो, लेट मी शो यू। हेयर इज इंडिया, हेयर इज चाइना, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो साउथ चाइना सी, तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल 9 डैश लाइन्स मानी जाती है। 9 डैश लाइन्स, 3 3 6 2 8 1 9, ठीक है, ऐसे मान लेना। Why? Because in these regions, actually, you will find islands, okay, which is a dispute between China, Vietnam, Philippines, and all. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना फिलीपींस टसल्स, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट साउथ चाइना सी, ठीक है। सो ये साउथ चाइना सी, दिस अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड ऑल। तो यहीं पर 9 डैश लाइन से एक रफ लाइन माना गया है, जिसमें कुछ आइलैंड्स हैं, है ना, डिस्प्यूटेड आइलैंड है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्प्रैटली आइलैंड, स्कारबोरो शोर, पैरासेल आइलैंड, दीज आर द नेम ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। ओके, so the next one is UN peacekeeping force is also known as blue helmets, white helmets, black helmets, green helmets. UN peacekeeping force को किस नाम से जाना जाता है? So this was actually developed to ensure, जैसे कहीं भी सिविल वॉर होता है तो वहां भेजा जाता है to ensure that the war should get reduced and all. ये बहुत जगह है, I think अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में बहुत जगह peacekeeping forces are there and all. So it is also known as blue helmets. A is the right answer। देखो ये उनकी blue helmet होता है, इसीलिए उनको blue helmets। तो यूनाइटेड नेशन की एक फोर्स होती है पीस कीपिंग के लिए। So A is the right answer। Okay. The next one is where do we find Abyei region recently in news? सूडान, सोमालिया, इथोपिया, कांगो। हाँ, इससे पहले का ए आंसर था। यस, आत्मकोरी, साई विनोद, यू आर राइट। Abyei region, ये न्यूज में यू शुड बी नोइंग इट। This you will find it in Sudan. So A is the right answer to this question. Let me show you. So here is India. This is Sudan. तो यहाँ पे आपको Abyei region मिलेगा, ठीक है। Why Sudan is in the news? Because there is civil war happening. I hope you are aware of this. So basically, there are one is a paramilitary force of Sudan, Rapid Support Force, and Sudan's army. Both are actually fighting each other. दोनों आपस ही में लड़ रहे हैं, and that is why this is actually the war, civil war is happening. Now, when the civil war started, India brought back Indians from Sudan. Okay, so what is the name of that operation? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? What is the name of operation under which Indians were brought back from Sudan back to India? Anyone? I am waiting for it. चलिए फाइंड आउट कीजिएगा, इट्स अ होमवर्क, ठीक है, गो एंड फाइंड आउट। The next one is 1.5 degrees Celsius target derives from where? Montreal Protocol, Paris Climate Agreement, COP26, Kyoto Protocol. So this is actually related with climate change, to control climate change and all. बताइए। किसी ने लिखा ऑपरेशन गंगा, नहीं, देखो ऑपरेशन गंगा जो था, पीपल ब्रॉड बैक फ्रॉम यूक्रेन, जो यूक्रेन से, यहाँ ऊपर में यूक्रेन है, यूक्रेन से जो लाया गया था उसको ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। सो इंडिया इज ब्रॉड बैक फ्रॉम सुदान, द ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब सवाल आ सकता है। ओके, 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट डिराइव्स फ्रॉम वेयर, इसके आंसर बताइए। सर कैन यू प्लीज टेक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी? यस साई बनोद, वी होप दैट इन फ्यूचर, जस्ट बिफोर द एग्जाम, जब जीके के एग्जाम्स होंगे, वी विल बी हैविंग सेशंस विद दैट। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का हम लोग यूट्यूब पे सेशंस रखेंगे, ठीक है। हाँ, यस, 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट डिराइव्स फ्रॉम वेयर? Yes, the right answer is Paris Climate Agreement. So B is the right answer to this question. ये काफी फेमस है, it was done in 2015, Conference of Parties 21 भी इसको कहते हैं, ठीक है। So this was the target, है ना। It is better that we should by the end of this century, by the end of 2100 AD, we should ensure that the average Earth's temperature should not rise by 2 degrees Celsius, and it is better that if it does not rise beyond 1.5 degrees Celsius. Because yes, we are seeing the increase in average temperature of Earth due to global warming. So that is why these targets were fixed, to ensure that we should not be doing much pollution. Otherwise, the Earth will see more global warming and more problems in the future and all. Okay, dengue is caused by, your options are virus, fungi, bacteria, protozoa. What is the right answer?
डेंगू कौन सी बीमारी से होता है? Anyone? मतलब किससे होता है? वायरस से होता है, तो पता होगा, सिंपल है, इट्स कॉज बाय डेंगू वायरस। एडिस इजिप्शियन मॉस्किटो होता है ना, बिकॉज देखो अभी आजकल डेंगू वगैरह चला हुआ है, सो हो सकता है पूछ लें मे बी, सो यू शुड बी नोइंग इट। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन? स्लोवाकिया, रोमानिया, हंगारी, बल्गारिया। अब देखो since Ukraine is in the news, they may ask questions something related with map and geography. किसका बॉर्डर टच नहीं करता यूक्रेन से? हाँ, डेंगू वायरस है, वो डिस्कस हो गया। सो द राइट आंसर इज बल्गारिया, डी इज द राइट आंसर। आई नो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट स्टिल थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। वेयर इज इंडिया? दिस इज यूक्रेन। ओके, लेट मी ज़ूम इट। सो यूक्रेन इज हियर, बेलारस से यहाँ टच करता है, इधर से रशिया से टच करता है, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगारी, रोमानिया, मोल्दोवा। हियर इज बल्गारिया। सो देयर इज नो बॉर्डर ऑफ बल्गारिया विद यूक्रेन। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, बट लेकिन थोड़ा बेसिक चीज पता होना चाहिए। जैसे यूक्रेन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? ये रिवर जाती, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिवर? दिस इज ब्लैक सी, दिस इज एजोव सी। ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज क्रीमिया, व्हिच वाज अर्लियर विद यूक्रेन इन 2014 कैप्चर्ड बाय रशिया एंड ऑल। ठीक है, सो ये सब चीजें पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रशिया यूक्रेन वॉर? उसकी वजह क्या है? एक रीजन है यहाँ पर, उसको कहते हैं डॉनबास रीजन। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द वॉर इज हैपनिंग। ठीक है, DONBASS। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट। चलो, द नेक्स्ट वन इज रोल्स रॉयस। आप जानते हो कि इसकी गाड़ी बहुत महंगी आती है और बहुत खूबसूरत होती है ना। सो इट इज द कार मेकिंग एंड एयरक्राफ्ट इंजन मेकिंग कंपनी। फ्रॉम वेयर? देखो, रोल्स रॉयस जो है सिर्फ कार नहीं बनाती है, एयरक्राफ्ट का इंजन भी बनाती है। तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? अब आप पूछोगे सर ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? उसका रीजन है बिकॉज रिसेंटली दे हैव डन समथिंग स्पेसिफिक ऑन एयरक्राफ्ट इंजन। कुछ उन्होंने रिसर्च किया है। ठीक है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। कैन यू प्लीज टेल मी? इट इज अ कार मेकिंग, एयरक्राफ्ट इंजन मेकिंग एंड कार मेकिंग कंपनी। फ्रॉम विच कंट्री? So the right answer is they are from England. So B is the right answer, UK. हाँ, हमको पता था बहुत सारे लोग जर्मनी आंसर कर देंगे, इसलिए कि ज्यादातर कार मेकिंग कंपनी BMW वगैरह जर्मनी की है, बट नो, here actually the right answer is UK. So B is the right answer to this question. Yes, आत्मकोरी, निखिलेश, very good. हाँ, Rolls-Royce tested hydrogen fueled aircraft engine in aviation world first. यानी एविएशन में तो वही एरोप्लेन से रिलेटेड पहली बार एविएशन इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हाइड्रोजन फ्यूल्ड एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट का इंजन रोल्स रॉयस बनाता है। ठीक है, उसमें टेस्ट किया है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, पॉल्यूशन विल गो डाउन। ठीक है, सो इफ दिस विल बिकम सक्सेसफुल देन ऑफ कोर्स इट विल बी अ बिग चेंज इन दैट। फाइनेंशियल टाइम्स वही यूके का अखबार है। ठीक है, सो दैट इज वाई रोल्स रॉयस के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज रोल्स रॉयस की गाड़ी के बारे में लोग बहुत जानते हैं, है ना। So B is the right answer to this question. The next one is which judgment of Supreme Court held that Speaker's decision regarding disqualification is under judicial review? मतलब ये हुआ कि if a speaker has taken decision of disqualifying an MP or MLA, it can be challenged in court. इसका ये मतलब हुआ can be challenged in court. अदालत में चैलेंज किया सकता है। कोर्ट में तो वही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, है ना, यहाँ पे that is what we are referring to. So, which judgment of Supreme Court? I know it's a slightly difficult question, but let me tell you. So the right answer is Kyoto Holohan case. So B is the right answer. ठीक है, ये actually disqualification of Mr. Rahul Gandhi was in the news and other MPs, तो इसीलिए you should be knowing it. Okay, the next is which company won the bid to construct new parliament building? अब देखो, नई parliament building news में, okay? So you should be knowing that which private company had got the bid to construct it. किसने बनाया था, किसको ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला था? टाटा, लार्सन एंड टोब्रो, जीएमआर ग्रुप, एयरकॉन। बताइए तो। सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, है ना। सो द राइट आंसर इज एक्चुअली टाटा इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। देखो ये 2-3 साल पुरानी न्यूज है। टाटा प्रोजेक्ट विंस बिड टू कंस्ट्रक्ट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एट टू 862 करोड़। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। ओके, the next one is which company got the bid to do राजपथ कर्तव्य पथ डेवलपमेंट? आई होप यू आर अवेयर। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक तो पार्लियामेंट हुआ, उसके आसपास का जो एरिया उसको राजपथ कहते हैं, नाउ इट इज कॉल्ड एज कर्तव्य पथ रीजन, है ना, उस रोड को। तो उसको कौन से कंपनी को वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला था? देखो मैंने ये फोटो लगाई और यहाँ पर हिंट लिखा है,
सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. कुछ याद आ रहा है ये फोटो देख के? एनीथिंग यू रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ दिस फोटो? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. मैं बताता हूँ. You remember this incident? Mr. Cyrus Mystery, he actually met with an accident last year. ठीक है. तो उनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर 4 सितंबर को. ये कार एक्सीडेंट था, आपको शायद याद होगा. तो इन्हीं की कंपनी है एक्चुअली. ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस कम्युनिटी. हाँ, तो शाहपुर जी पॉलोंजी ग्रुप जो है उनके वो फाउंडर में से हैं. ठीक है. उनके पापा का भी डेथ हो गया था सेम ईयर में. देखो लेकिन साइरस मिस्ट्री दैट शाहपुर जी पॉलोंजी ग्रुप सेकंड पर्सनल लॉस इन 2022. एक्चुअली क्या हुआ था कि इनका तो डेथ हुआ ही सितंबर में, और इससे कुछ महीना पहले उनके पापा का भी डेथ हुआ था सेम ईयर में. सो दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज. तो इसीलिए तो जो देखो क्या होता है, एक तो हुआ पार्लियामेंट, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया, जैसे ये इंडिया गेट है, तो उसके बाद ये सब जो रोड्स है ना, इसको कर्तव्य राजपथ कहते थे, अब इसको कर्तव्य पथ कहते हैं. ठीक है. अभी नाम भी चेंज किया गया था रिसेंटली. अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज राजपथ. ठीक है. उससे पहले ब्रिटिश के टाइम पर किंग्सवे कहते थे, ब्रिटिश के टाइम पर. ठीक है. ठीक है. लेटर ऑन चेंज टू क्या राजपथ, नाउ कर्तव्य पथ. ठीक है. सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. The next is, what is the name of political party of Recep Tayyip Erdogan? So he is actually the one who won the Turkish presidential election, and he was in the news. So please tell me, he belongs to which political party? Political party of Recep Tayyip Erdogan is actually AKP, Justice and Development Party. So in Turkish language they call it as AKP. ठीक है. वो टर्किश लैंग्वेज में लिखते हैं. सो द राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके. द नेक्स्ट वन इज इस्तांबुल इज अ सिटी व्हिच इज सेपरेटेड बाय स्ट्रेट. देखो स्ट्रेट से भी क्वेश्चन आता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे एमबीए के एग्जाम्स का, सो यू विल फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रेट. ठीक है. टिसनेट सीमैट समय पूछा हुआ है. सो इट इज अ सिटी व्हिच इज सेपरेटेड बाय, देखो ये बीच में एक पतला सा रास्ता होता है, दैट्स कॉल्ड एज स्ट्रेट व्हिच कनेक्ट्स द टू बिग वाटर बॉडीज एंड ऑल, है ना. So Istanbul is a city which is separated by Bosphorus Strait. आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पूछा हुआ है पहले. ठीक है. So Bosphorus Strait they can ask. So B is the right answer. So let me show you. So here is India. This is Turkey and here is, let me show you. ये मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, यहाँ पर इस्तांबुल के पास बॉस्फोरस स्ट्रेट है. सिमिलरली पहले पूछा था स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, वो यहाँ पर है. सो इट कनेक्ट्स अटलांटिक विद मेडिटेरेनियन. ठीक है. ओके. सो बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडी, ये बताइए. इस तरह क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. सिमिलर क्वेश्चन स्ट्रेट से रिलेटेड. रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मार्मरा, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन, अटलांटिक एंड पैसिफिक. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? Bosphorus strait connects which two water body? The right answer is actually Black Sea and Sea of Marmara. देखो मैं दिखाता हूँ. ये वाला ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है. अगर इसको जूम करोगे तो ये मेडिटेरियन सी है और ये ब्लैक सी है. ये वाला जो है ना, इसको सी ऑफ मरमरा कहते हैं, मरमरा. ठीक है. तो ये वाला जो रीजन, दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट. तो क्या होता है, शिप ना ऐसे घुस के यहाँ से पतला सा रास्ता से चली जाती है. ठीक है. रशिया जाना हो या यूक्रेन जाना हो. ठीक है. ये काफी ज्यादा न्यूज में था दिस रीजन. वाई? स्पेशली बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. सो रशिया की जो शिप है वो ऐसे आती है. ठीक है. और यूक्रेन की शिप ऐसे आएगी. ठीक है. और फिर इसी से पास करती है, फिर वो वर्ल्ड में बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जाती है. ठीक है. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो बी इज द राइट आंसर. ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. Which country has recently come up with anti-LGBT law to impose capital punishment? Uganda, Russia, Japan, Netherlands. सब न्यूज़पेपर्स उठा हुए करंट अफेयर सेक्शन. कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक वाला सेक्शन भी कराइए. तो एग्जाम से पहले उस पर भी हम लोग कराएंगे स्पेशल सेशन. ठीक है. अभी जो है फिलहाल जो है संडे 9 PM में, इसमें मोस्टली ज्यादातर करंट अफेयर्स का सेक्शन डाल रहे हैं. कुछ स्टैटिक भी होता है बट मोस्टली करंट अफेयर्स का. जो एग्जाम से पहले विल बी हैविंग सम सेशंस इसमें हम लोग, जिसमें हम लोग स्टैटिक वाला भी कवर करा देंगे. ठीक है. एंटी एलजीबीटी लॉ टू इम्पोज कैपिटल पनिशमेंट इज एक्चुअली ऑन रिसेंटली पास इन युगांडा. युगांडा इनैक्ट्स हार्श एंटी एलजीबीटी लॉ. ये द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया था. अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यू मस्ट हैव सीन दीस थिंग्स. यस, अनिरुद्ध इज राइट. ए इज द राइट आंसर. सो हियर इज इंडिया एंड हियर यू विल फाइंड युगांडा, जो कि अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना ये वाला, इसमें युगांडा इज देयर.
So A is the right answer. The last one is which team has won IPL 2023? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. Anyone? तो इसमें कुछ चीज और जैसे पूछ सकते हैं कि फाइनल में कौन गया, रनर अप कौन था, है ना. देन दे कैन आस्क अबाउट कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज एंड ऑल. सो इट हैज बीन वन बाय CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, है ना, बाय डिफीटिंग GT, है ना. So Chennai Super Kings won it, fifth title by defeating Gujarat Titans. Most valuable player Shubham Gill, है ना. Then most runs by Shubham Gill and most wicket Mohammad Shami and all. So this you should be knowing it. A is the right answer. Yes, Anirudh and all, Alauddin Haq. Okay, so this is all about today's class. Okay, so please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S Exam Prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.